स्क्रीन नजर आ रही है भाई? यस सर। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। आवाज आ रही है मेरी या नहीं? आवाज आ रही है सर। आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। So let us start routing today. Last time I told you something about subnetting and variable length subnetting. I'm giving a question. I think I told how to divide the network into 16 subnets which were of fixed length, and later on told you how to do the variable length subnetting, and the question was there to allocate, from that from क्या हुआ, कुछ बोल रहा है कोई? For allocation to different customers or to different for different demands which is of variable nature. Okay, which was of variable nature. So I give in a question. Okay, we'll be seeing that question maybe in next lecture probably. So let us first today discuss the routing, and as I said that we have divided the network into different subnets. So when you try to connect nodes in one subnet, then generally they are connected like this. Either they are connected through a bus, so nodes are connected like a bus, using a bus, or can use a hub and can connect nodes which are in the same subnet. So when the packet is moving from one node to another node, they are using that link layer technology and transferring the packet like Ethernet. Or they can use a switch to connect. So all these four, if they belong to four nodes, they need to belong to the same subnet. And they are connected through switch. In order to transfer the packet, the hardware address is used and they are can. But one subnet, say subnet 1, and the nodes in another subnet. So you have used switch or hub or whatever it is. And subnet 2. As I told you, these days generally we use a switch. So this forms one subnet. You can say subnet 1, something like this. And now the nodes in subnet 1, if they want to communicate to the nodes of subnet 2, so we need to use a device which is known as a router. So whenever a packet is to be transferred from a node which belongs to one subnet to a node which belongs to some other subnet, then we need to use a forwarding device, a special forwarding device which is known as router. Okay. So switch, which is a link layer device, transfers packet within one subnet only. The moment we divide subnets and want to transfer packet from one subnet to another subnet, a node in one subnet and node in another subnet, then we need to use a router.
Okay. So in routing, as I said, we were using two things. Finding the path and then forwarding packet over the path from host to destination. So pathfinding is one thing, and I first will try to tell you when we have to find a path, we try to create a database or a table on every router, which is used as a forwarding table while we try to forward the packet through the path. Okay, so let me come to the routing portion and how this table is created. Before I go to that, take an example for creation of the table and then trying to forward the packet. Let me just give you a brief idea. See, in the beginning, if you remember, I told you about the topology of the network. Okay. Now at this point, you will find that if we add some router somewhere in the network, then the topology changes. Topology of the network changes. Okay. And let me create a simple topology which will initially have two subnets and will connect those two subnets to a router, and then we'll try to show you how the table of the router is created. Okay. For creation of the table and to find the root, one method, there are generally two ways which are used. One you can say is known as static routing. The other one is known as dynamic routing. Whether it is static routing or dynamic routing, finally on every router which is in the network or which is in your LAN, that router will contain a table. So whether it is dynamic routing or static routing, the final output is a table over the different routers. So the router should contain a routing table. As you know, we have already seen that in switch we have a table. Okay, and that table is based on port number and hardware address. Similarly, routers also have a table. Now, how that table is going to be created? It can be created by an administrator using the knowledge of the topology, using the map of the topology, if you want to say, like if we want to find a route. So what happens, we try to find out the map of that location in order to find a route, and then we'll say, okay, let us find a better route, or we'll not go initially in that term कि better route कौन सा है और खराब route कौन सा है, छोड़ दीजिए अभी आप पहले केवल ये देखिए कि how to find the route and how we try to map that route inside the routers so that the packet, when it is coming to the router, can be forwarded in a particular direction in order to deliver the packet to a particular destination. Okay, so that knowledge which is about the topology of the network need to be translated into the routing table. Now, who will translate this? Who would be having the knowledge of the network?
one obvious thing is the administrator who is creating that network is having the knowledge of the topology. जैसे कि आपको पता है कि मैप है हमारे पास, तो मैप में हम रूट ढूंढ सकते हैं या रूट फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द मैप कि कौन सा सिटी किधर है, डायरेक्शन क्या है वगैरह वगैरह. Similarly here, the which subnet is which site, which router is connected to which subnet, and that knowledge of the topology should be there, and the administrator can have that knowledge. Okay, and the administrator can create the routing tables on different routers. Then we say this is a static routing. Okay, we use this term static routing when the administrator is creating the routing table, and obviously the routing table needs the knowledge of topology. Without that, it is not possible. In dynamic routing, see, somehow the topology knowledge is to be obtained by every router. Okay. And as I said, who creates the routing table? Algorithm. Algorithm creates this routing table. Okay, using obviously the knowledge of the topology. The same thing. The topology knowledge is required to the algorithm. Okay, and this knowledge, how it happens, how it is obtained, the different routers in the what they do, they exchange messages to each other. They exchange some messages, and those messages are exchanged in such a fashion so that the topology, the knowledge of the topology can be in each and every router, and this algorithm is running on every router, and then the router using that knowledge, or the algorithm using that knowledge, creates routing table over the router. The final output, as I said, is the routing table. It depends. The knowledge is required now. Every router, the administrator can put some initial knowledge into the router, and then those routers can exchange the information to each other and can pass the information about that knowledge which the particular router is knowing, and then the algorithm can find out that knowledge, can get that knowledge, and can try to create the routing table. Okay, so we'll use first. Let me explain how the routing table is created manually. As I said, the administrator can create it manually using a very simple command: root, add, and delete. Okay, so root add and root delete command can be used on your machine also. On Windows, you can use root add, root delete command. So दिखाऊं यहाँ पे अगर command line. Okay, so you can use, if you use root print, I think I shown you the root print command, which was print तो बोला था अच्छा dash हटा दिया. Root print command. So to print the routing table on your machine. Now the same command can be used to, if you see root की help देखिए, so print हो गया और फिर add और delete होगा. से root delete ये नीचे दिया हुआ है और add ये है.
So can use root add command, add, or can use delete command. Yes. हालांकि यहाँ root add or root delete command can use to the administrator can use to create the routing table. If not only at router, on every machine, as I said, the machine need to have a TCP IP module, and IP module should be running, and IP module finally what it is doing, it is forwarding the packet, configuring the routing table. Okay, so routing table is prepared, is needed on each and every machine. Then only your packet is going to be forwarded. If your machine do not contain correct root, or if you just use root delete command and delete some of the roots from the routing table, you will find that you are not able to send the packet outside of your machine. You don't need to worry if you are the super user, and if you use root delete command, a particular row can be deleted from your routing table of your machine. But anyway, if you do not know anything, just reboot your machine, routing table is going to be prepared again. That's not a problem. Okay, if you want to test, you can do that. So now let me come to take an example and explain how the routing table is created. And then once on some routers, I show you how the routing table is created. And then we'll take a packet and we'll show you how using the routing table, the packet is transferred from source to destination. These are two things which I need to explain. Okay, और डायनेमिक राउटिंग के एल्गोरिथम वो बाद में देखेंगे हम लोग. एक बार आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं रूटिंग टेबल and how can routing table be used to forward the packet. Okay, that algorithm of forwarding. Let us see that. Once we are able to understand that, then we will see in the later on the algorithm. There are three algorithms which we will be seeing. One is known as RIP. We'll be seeing these three algorithms, but बाद को देखेंगे. जो तीन algorithm हैं जो हम लोग देखेंगे बाद में. Those are one is known as RIP, Routing Information Protocol. The other one is OSPF, Open Shortest Path PUF. It uses the Kestra algorithm of shortest path, which you may have studied in data structure or algorithm. And then a border gateway protocol. This is the protocol which is used by the ISPs over the internet for creation of the routing tables and the creation of finding out the path. Okay, so border gateway protocol. That's a very big protocol. We'll just be seeing the fundamental of that. Okay, we'll not go into much detail of border gateway protocol. Somebody of you, if goes at some time to some ISP and need to maintain the network or need to create the network, then probably we'll be going to see that border gateway protocol specifications in more detail. Okay. So we'll be seeing these three algorithms, but obviously, first let us see manually how we create a topology and the routing table depending upon the topology, and then see how the packet is forwarded over those topologies and routers from one machine to another machine. Okay. तो कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो फिर शुरू करता हूँ ये टोपोलॉजी बनाना. See, as I said that whenever we need two subnets, if we have two subnets, right, and in order to forward the packet in two subnets, we need a router. So first let me create some subnets. Again, the same example, same IP address example. Suppose it's 202.141.55
0.0/24. Now this has been divided into say 8 subnets of fixed size, obviously. So what is going to be 8 subnets divide करने तो कितनी bit चाहिए 8 subnets के लिए? We need 3 bits, right? And obviously now in this this was the network portion because /24. So first 24 bits you cannot change, cannot do anything in these 420. Remaining 8 bits, out of 8 bits we'll take first 3 bits. Okay, so 3 bits to create 8 subnets, 2 to the power 8. Oh, sorry, 2 to the power 3, which is equal to 8, right? So we'll need 3 bits, and that would be if you take this this one, this will be 0, 0, 0 first 3 bits and remaining 5 bits. Okay, and that is going to be first subnet. If we keep all 3 bits 0, then we'll go on change 0, 0, 1, and this is obviously this will go on changing from the host portion can vary. There are 5 bits for host portion, and 3 bits are taken into the subnet portion. 8 subnet create करने हैं, right? So this is 0, 0, 0, 1, 0, and then 1, 0, 1, 1. So if you denote the IP address, this is 0.0. Then next one is 0.32. The next one is 0.64. The next one is this 0.96. उसके बाद कौन सा होगा? ये इसको 1 कर दिया, तीनों पे 0 and 2, 3, 4, 5. Okay, so this is going to be 0.128. Okay, so obviously this prefix, this is a prefix which I'm not now writing. I would be writing 0.0, 0.32, 0.64, 0.96. This means 202, 0.141, 0.55, 0.32, 0.64, 0.96. Okay, so that prefix is assumed now. So these are different subnets. Out of these 8 subnets, I can say this is subnet 1, this is subnet 2, this is subnet 0, and this is subnet 3, this is subnet 4, and like this. Okay. तो इसमें किसी को कोई problem तो नहीं? I would be using these subnets to show you the example. 8 subnets, fixed length. So obviously this is going to be one more thing. I should write the slash value also here. That slash value is what 0/27. Okay, so we'll be writing 202.141.55.0/27. Now see this address 0.0/27 and this address 0.0/24. Both are different because the moment we put /24, there are 256 addresses in this block, and the moment we say /27, this means there are 2 to the power 5, which is equal to 32. So only 32 addresses. Okay, and this is 202.141.55.32/27. Okay, the another block. So this is this has been divided into 8 blocks. ये है और 4 block ये किए 3, 1, 2, 3 और 4. Okay, and then divided into 8 blocks. Each is having 32 addresses. 32, 32, 32, like this. Okay. So now, Richard, let me take this exam, these subnets, and go to. As I said, if you want to transfer a packet, suppose there are 2 subnets,
and there is a router between these two subnets. A router, say R1, is there, and it is connected to one subnet which is having a machine, say N1, and this side of subnet is say 0.64. I'm not writing 202.141.55. The other side of the router is having a subnet, say 0.32, and this is having a node, say N2, which is having the IP address. Say this node is having IP address 0.40, suppose, and N1 is having an IP address, say 0.70. So obviously this IP address of a node, please remember IP address of a node, when we say 0.70 is the IP address of node N1. This always means that 0.70 is the IP address of the Ethernet card or the interface card. If I should not say Ethernet always, because there can be some other interface, other link layer technology. But agar Ethernet le lein by default, so 0.70 is the IP address of the interface card of this machine, not the IP address of the machine. जो इंटरफेस कार्ड है IP address उसका होता है. Okay. Now the router which we are connecting here, this is also connected on a particular interface. So this interface, suppose, need to be connected to subnet, say this subnet 1 portion. So the IP address of this interface, which is connecting towards 0.64, that should belong to the same subnet. So if I allocate the IP address 0.65 to this interface, and here the second interface, which is connecting towards 0.32, it again need IP address from 0.32. That means suppose we allocate 0.33. Okay, so there are two interfaces on R1. One is interface, if I denote this interface, say by the name ETH0. And the other interface we denote by ETH1. Okay. This is the name of the interface. Please remember, this name of the interface is unique within the device only. If we have a router R2 or router R3, again they can have Ethernet 0, Ethernet 1, like this. But the IP address of say Ether 0 is 0.65, which is connecting towards 0.64. Okay, but the IP address is unique within the network. Over the network, over the internet, this IP address is unique of that interface. इंटरफेस का जो नाम है, ये है ईथर 0, ईथर 1, ये एक नाम है ईथर, उसको नाम नेमिंग कन्वेंशन, जैसे आपके पास हार्ड डिस्क है, आपने 2 हार्ड डिस्क लगाए, 3 हार्ड डिस्क लगाए मशीन में, तो डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 ऐसे हो सकता है. इसी तरह से आपके पास मशीन में 2 इंटरफेस हैं, 3 इंटरफेस हैं, देन कैन कॉल देम ईथर 1, ईथर 2, ईथर 3 और ईथर 0, like this. This is the name of the interface within the router, and it's unique only within the machine. दूसरी मशीन में फिर सेम नेम हो सकता है, okay? लेकिन IP एड्रेस सेम नहीं होगा. IP एड्रेस यूनिक होगा ओवर द नेटवर्क और ओवर द इंटरनेट. ठीक. So this is the basic configuration now. If anybody have any question, ये suppose कर लीजिए S2 है, ये S1 है ना, और ये आपका S2 था ना, 64 X2 हुआ और 632 वाला S1 हुआ. तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए.
ये अब एक टोपोलॉजी हो गई. This is a topology in which there are two subnets. Each subnet can have maximum 30 nodes connected. At this moment, we have connected two nodes. One is router R1, one interface of router R1, and one is a node. Similarly, in S1, there are two nodes connected. One is the router R1, 0.33, and another one is a node N2. So any confusion to anybody? This is a topology now, a simple topology in which a router is connecting two subnets. When we say router, generally this means कि router would have at least two interfaces. दो से ज़्यादा हो सकते हैं, but कम से कम दो तो होंगे ही होंगे. मशीन आपकी है, जो होस्ट है, उसमें जनरली एक ही इंटरफेस यूज होता है ना. हालांकि प्रोविजन होता है उसमें दो तीन इंटरफेस का, आप चाहें तो खरीद सकते हैं. ओके, if you want to use your machine as a router, yes you can. विंडोज में तो मालूम नहीं कैसे करेंगे, विंडोज में ही हो जाएगा, पर लिनक्स में बहुत आसानी से आप राउटर बना सकते हैं. विंडोज में भी बन जाएगा ऐसी कुछ नहीं. तो ये सिंपल टोपोलॉजी है. अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इसमें तो बताएं. अदरवाइज let me explain how the routing table is created. ये सबनेट्स, दो सबनेट्स को कनेक्ट कर रहा है. राउटर R1, one subnet is 0.64, other subnet is 0.32. Okay. And now let me show you the routing table of this router R1. कैसे बनती है. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताए अब तक, अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो. चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है, then let us see the routing table of R1. R1 routing table. There is a column which is known as destination, which contains the destination network address, which is known to R1. The other column is mask or net mask corresponding to that destination network. Okay. And the next column is from this router R1, if we want to transfer packet to some other node, right? So that is the next hop. I should say next hop, or generally it is known as gateway. Okay. The term gateway is used, but generally it means the next hop. Okay. So in routing table you may find that it is perhaps देखें इसमें क्या यूज करता है, ये गेटवे यूज करता है उसको या वही बोलता है. डेस्टिनेशन नेट मास्क गेटवे, देखिए ये कर रहा है ना राउटिंग टेबल में, जो थर्ड एंट्री है यूजिंग एट गेटवे, सेइंग गेटवे. ये एक्चुअली मीनिंग इसका है कि वो नेक्स्ट हॉप ही जनरली मतलब होता है इसका. ओके, बट एनीवे क्योंकि ये यूज होता चला आ रहा है गेटवे, तो गेटवे ही है. और ये नेट मास्क है जहां मैंने मास्क लिखा है, और डेस्टिनेशन. तीन कॉलम ये पहले ही देख लेते हैं. तो आप इसको चाहे नेक्स्ट हॉप ना कहिए, इसको दिमाग में रखिए कि ये नेक्स्ट हॉप है. इसको गेटवे क्योंकि यूज होता है तो गेटवे ही रखिए. ये मास्क है, या इसको आप नेट मास्क भी यूज कर सकते हैं. Now see, one destination which is known to router R1 is 0.64. So 0.64 which is connected towards right side. मास्क कितना है 0.64 का? हम लोगों ने जो सबनेट डिवाइड किए थे,
तो सबका मास्क कितना था? 8 सबनेट बनाए थे /27 फिक्स लेंथ सबनेट है, 3 बिट नेट ट्रांसफर टू द सबनेट पोर्शन, so 24 plus 3 27, so 27 bits, so mask is /27. And what is the gateway? देखिए ये mask /27 मैंने लिखा है, but finally it is going to be converted into a value. ये जो 0.64 लिखा है, this is actually 202.141.55 0.64. मैंने केवल इजी करने के लिए 0.64 लिख दिया है, प्रीफिक्स वाला छोड़ दिया है, 202.141.55 उसको जस्ट छोड़ा हुआ है वहां पर, हाँ, और /27 यहाँ लिख दिया है मैंने, बट एक्चुअली ये क्या होगा? /27 मीन्स 255.255.255.3 बिट है 192 128 plus 32 192 plus sorry 128 plus 64 192 plus 32 224. So this is the net mask here, जो net mask लिखा होगा, हाँ, अभी यहाँ मैंने /27 लिख दिया है. You need to understand that. Now gateway. As you can see, R1 is directly connected to 0.64. So if from R1, a packet, R1 is having a packet and it wants to forward it towards 0.64, right? So it can forward it through 0.65, right? 0.65 is the subnet, the interface which it is having. So it can use 0.65 as the gateway or as the next hop, okay, where it is want to transfer. So the interface through which it can transfer is gateway, this 0.65. Similarly, 0.32. अच्छा एक चीज हो, अब the interface कौन सा है? ये ether 0, the name is, so we'll put ether 0. And whether this network is directly connected or indirectly connected, there is a column which is known as flag. Flag contains the information whether that particular subnet which is in the destination, in that row, that destination, that subnet is directly connected with this router or indirectly connected. Indirectly means there are some other routers in between. Here you can see 0.64 is directly connected. So the flag value is 0. That indicates a direct connection. Okay. So flag value is 0. We'll be using this flag value when would be forwarding the packet. Okay. This connection is a direct connection or indirect connection. We'll be using this in forwarding algorithm, okay, while trying to forward the packet. So that's value tells here, if it is 0, it tells that particular subnet is directly connected with that router. If it is 1, it says that that particular subnet is indirectly connected with this router. That means there are some other routers in between the router and the subnet. Okay. Now say 0.32 again. Now you can say slash value is mask, net mask is /27. Net mask of what? Of 0.32. मैंने आपको बताया था कि नेट मास्क को हम राउटिंग टेबल में यूज करेंगे. ये यहाँ यूज हो रहा है, देखिए जो आपका नेटवर्क है उसका नेट मास्क /27 है, और इसको हम यूज करेंगे जब पैकेट फॉरवर्ड करेंगे तब. और in order to send the packet to 0.32, where through whom it can be sent? Through 0.33. So that is the gateway. ये देखिए आप
0.32 पे भेजना है तो हम 0.32 के थ्रू भेज देंगे इधर. Interface is ether 1 and connection is direct ki indirect. Direct. 0.33 or 0.32 is directly connected, so it's a direct connection. So this is the routing table for present topology. पैकेट कैसे भेजेंगे? पैकेट भेजने में इन एंट्रीज को यूज करेंगे, खासकर as I said, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, this one, net mask, this one, or obviously gateway. We'll be using these things. Any question? We are keeping in the routing table the entry in a row for a subnet 0.64 or 0.32. We are not keeping the entry for N1 or N2 for the nodes, for the IP address of the nodes. No. So you can understand now that the first address which we have not allocated to any node, the first address of the block, that is used here in the destination column of the routing table. So first address is used in the routing table. That's why it is not allocated to any node. We'll be seeing it. Okay. कोई क्वेश्चन तो बताए. अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे चलें. जब ना आया हो तो बताए. If anyone is having any question related to this, कि टेबल कैसे बनी है और क्या किया है आपने टेबल बनाते वक्त. चलिए, तो अगर इतना हो गया, so now let me change the topology now. As I said, the moment you put one more router, the topology changes, and once the topology changes, routing table of every router of that network needs to change. Okay, so now let us change the topology. Topology change कर देते हैं. And this is here. यही कर देते हैं चेंज. क्या करना है, यहाँ कर देते हैं. देखिए, अगले पेज पे ही कर लेते हैं. छोड़िए, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. R1 connected to N1 is connected. I have used a bus for connection of R1 and N1 and N2. We have used a bus. Okay. Actually, this connection will be through a switch. But to keep things simple at this moment, because we want to concentrate on the routing part, not on the link layer part. Okay, so that's why I have taken a bus, so that when we will be transferring the packet, you can understand, okay, packet will go like this. But actually there would be switch here. R1 और N2 जो connect होंगे वो एक switch लगा के connect होंगे, एक सबनेट के अंदर है. But अभी आप उसको बस ही रखिए, बस से सीधे सीधे समझ में आता है, इजी रहता है ना. R1 and then connected to N2. This is 0.40, this is 0.70,
and this one is ether 0, ETH 0, this is ETH 1. The IP address of this is 0.65, 0.64 is this subnet, which is S1, S2, and 0.32 is this subnet, which is S1, and this IP address is 0.33. Now let me connect one more router here, which is R2, and that router is connecting to another subnet, which is 0.96 subnet, which is S3. 0.96 सबनेट लगाया और एक नोड है यहाँ पर इसमें which is N3. IP address of this N3 obviously will be from 0.96. जिस सबनेट में नोड होगा उसी सबनेट के IP address से एड्रेस एलोकेट करना होगा उसी ब्लॉक से, right? So from the block of 0.96, so suppose this is 0.100. Okay, and this one is a ether 0, ETH 0, and this interface of router is ETH 1. Okay, so the IP address of the router which is connecting towards 0.32 will be from that 0.32 subnet. So इसको 0.33 यूज हो गया, 0.40 यूज हो गया, इसको 0.34 दे देते हैं. Okay, so one interface of router R2 is connecting to 0.32 subnet. 0.34 is that. And another interface is connecting to 0.96. So यहाँ 0.96 से दे देते हैं इसको, which is say 0.97 IP address. 202.141.55 उसको आप assume कर लीजिए कि वो prefix लगा ही हुआ है, इसीलिए मैं point लगा के लिख रहा हूँ. Now see the routing table of R1 again. So R1 की अभी तक routing table क्या थी? Destination, net mask, gateway, interface and flag. अभी तक कितना था? 0.64/27, 0.65, ether 0, flag value of 0, 0.32/27, 0.33, ether 0, ether 1, flag value of 0. These two entries were there. The moment we have entered this 34, oh sorry, R2. Now R1, if you look over as an administrator, the R1 knows about 0.96 also now. So that knowledge which is about 0.96 network, right? Let us put it in the table. So 0.96, knowledge का मतलब यही है कि 0.96 network, S3 network has also been connected now with R1. 0.96 का mask कितना होगा? /27. Now, when R1 receives a packet and packet is having a destination which belongs to 0.96 subnet. So where R1 should send a packet? कहाँ भेजे R1? हाँ भाई बता. 0.96 पे भेजने के लिए अगर उसका डेस्टिनेशन ऐसा आईपी है जो 0.96 के अंदर है तो कहां पर भेजे R1 उसको? 0.33 सर. 0.34 यहां से R2 को भेजेगा तभी R2 डिलीवर करेगा आगे पैकेट को. And in order to send the packet to R2, it need to deliver the packet to 0.34, right? So now gateway, that's why I was saying it is next hop. Now next hop is, in order to send the packet to 0.96, the next hop of
One is R2, the interface which is connecting to R1 towards R1, which is 34. Okay. So next stop, now I'm saying, now you can understand from R1, the next stop is R2. And R2 के अंदर क्या जो इंटरफेस है which is connecting towards the R1 or towards the subnet which is connected to the interface of R1. Okay, is 34. So R1 will transfer the packet to R2 through interface 34. इंटरफेस तो R2 का 34 ही है ना, आप किसी इंटरफेस को ही तो पैकेट ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जब करेंगे. ओके, उसका आईपी एड्रेस 0.34 है. और R1 का इंटरफेस कौन सा होगा, जहां से जाएगा ईथर 1, इस साइड में जाएगा, so it is ether 1. And now see 0.96 is connected directly or indirectly? Indirectly. So flag value is 1, which says it's a indirect connection. Okay. So this is the routing table of R1. This change has been now included into the routing table by the administrator using root add command. Using root add command, you can add this whole row into the routing table. ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि जो नॉलेज है, आपने एक राउटर ऐड किया, टोपोलॉजी चेंज हो गई. टोपोलॉजी चेंज हो गई तो ये जो नॉलेज है इसको राउटिंग टेबल में कैसे डालें. एडमिनिस्ट्रेटर उसने यूज किया कि भाई R1 से इधर कनेक्टेड है, R2 का इंटरफेस 34 है, तो उसने इसमें 0.96 पर अगर पैकेट को भेजना है ना, तो 0.34 को देना पड़ेगा पैकेट. ओके, और कनेक्शन इनडायरेक्ट हो गया. 0.96 का जो कनेक्शन है वो R2 के थ्रू है, इसलिए वो इनडायरेक्ट हो गया. सो फ्लैग की वैल्यू 1 रखी. So that knowledge has been included into this table. Okay, and we'll be using these things while forwarding a packet inside the routing table. Okay, तो अगर ये किसी को समझ में ना आया हो, चाहे पहली वाली राउटिंग टेबल या दूसरी वाली, तो मुझे बताए. आ गया समझ? चलिए, तो 5 मिनट का गैप करते हैं, फिर मैं एक पैकेट ट्रांसफर करा के दिखाता हूँ इस इंफॉर्मेशन को राउटिंग टेबल की यूज करके. R1 की है ना, पहले पैकेट ट्रांसफर करके दिखाता हूँ, फिर इसको आगे इंटरनेट के लिए टोपोलॉजी को एक्सटेंड करेंगे. अभी आप इतने को समझ लीजिए बस. ठीक, तो 5 मिनट का गैप कर लेते हैं, फिर बात करते हैं. कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताए. चलिए,
करते हुए आया कार्य पूछ रहा चलिए तो देखें कि पैकेट ट्रांसफर कैसे होता है यूजिंग दिस राउटिंग टेबल एंड फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम। फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बात को बनाता हूँ। आप पहले आइडिया देख लीजिए कैसे ट्रांसफर होता है पैकेट। Suppose we have a packet, we need to transfer the packet from N1 to node N3. Packet is suppose is P. Now this packet P will contain the IP address of source and IP address of destination. So IP header, we'll be discussing the format of IP address in the end. The IP header contains, as you know, Ethernet header was containing source hardware address and destination hardware address. Similarly, IP header contains source hardware, source IP address and destination IP address. Okay, so 0.70 is the source IP address and destination is 0.100. I'm not writing 202.141.55. That is a prefix which is assumed will be here. Okay. केवल उतना ही fraction लिख रहा हूँ 0.70 or 0.100. 0.100 is destination IP address, 0.70 is source IP, and this is the destination IP. Right. That will be the packet. बाकी packet के अंदर जो data है वो होगा वो मैं नहीं लिख रहा फिलहाल. That is the packet. Data portion और अंदर TCP का header और application का header that I'm not writing.
will be included in the data portion. तो अभी केवल इतनी बात करते हैं. That is the packet. And from N1, packet obviously will initially go from N1 to R1. तो N1 to R1 बात को देखेंगे क्योंकि वहां पे N1 की राउटिंग टेबल यूज होगी and how the routing table of N1 is created and is used वो बात को देखेंगे, right? उसके बाद from R1 the packet will go to R2. So we'll see first how the packet is moving from R1 to R2, and then from R2 it will move to N3. So these two parts, R1 to R2 and R2 to N3 will be seen. Okay, first. So R1 to R2. Let us see. Assume initially that the packet has reached to R1. मान लीजिए कि R1 तक पहुंच गया है. कैसे पहुंचा वो बात को बताते हैं. N1 से R1 तक कैसे जाएगा वो बाद में देखते हैं. If you understand this, R1 to R2 and R2 to N3, that is the basic step. पूरे इंटरनेट में वही यूज होते हैं. ये दो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब आप N1 से R1 भी समझ जाएंगे. Okay, that's not a big thing. Over whole internet, in order to transfer the packet, R1 से R2 तक जैसे जाएगा वैसे ही पूरे इंटरनेट पे जाएगा, और R2 से N3 जैसे जाएगा उसी तरह से ट्रांसफर होगा पैकेट. These two steps you need to very clearly understand. Okay. So what is done? The packet is having source at destination address 0.100. So at R2, at R1, what happens? See, पहला काम क्या करना है हमको? 0.100. See, basically what we need to do, we need to search where is 0.100 in the routing table of R1. That is the task. So if you remember, I told you the net mask is used to find out in which block this net mask, this address, the destination address is existing. If you look directly, you can directly see that 0.100 is existing in 0.96 network. So row 3, right? But let us see how we do it in the algorithm. What we do, we apply on this 0.100 on the destination the net mask of first row first. आप जब सर्च करेंगे तो लीनियर सर्च करते हैं पहले, सिंपल सर्च करते हैं, लीनियरली सर्च करते हैं. हाँ ठीक है. तो अभी कोई और है उसको ऑप्टिमाइज नहीं करते, तो पहले सादा सादा जान लीजिए और फिर बाद में आप लोग जब जान जाएंगे तो फिर अपना यूज करते रहिएगा उसको कैसे यूज करेंगे. तो 0.100 is the destination. To find out to whom which row 0.100 is matching, first we'll compare 0.100 obviously with the first row, then 0.100 with the second row, then 0.100 with the third row. We try to find out is it matching with some row or not. नहीं मैच कर रहा है तो क्या होगा वो फिर बात को देखते हैं. फिलहाल तो 0.100 will match with third row, right? कैसे वो as I said कि क्योंकि 0.100 थर्ड रो से कब मैच करेगा? When 0.100 is going to be converted into 0.96. ऐसे तो मैच नहीं करेगा. अगर आप मैच करेंगे 0.100 तो 0.96 के साथ तो मैच थोड़ी ना करेगा, वो तो कह देगा नॉट मैच, नॉट फाउंड. So we have to convert 0.100 to 0.96 so that it can match, and that conversion is to be done through net mask. इसीलिए मैंने आपको अगर याद हो कि net mask बताया था जब कि net mask is used to filter out the initial address of that subnet to whom that net mask belongs to. जिस सबनेट को net mask belong करता है उस सबनेट का इनिशियल एड्रेस डेस्टिनेशन में से फिल्टर आउट करने के लिए यूज होता है. डेस्टिनेशन में उसका उस सबनेट का इनिशियल एड्रेस एक्सट्रैक्ट करना है. दैट इज फॉर नेट मास्क यूज. सो व्हाट वी डू, द ऑपरेशन इज एंड ऑपरेशन व्हिच इज टू बी अप्लाइड. सो वी अप्लाई एंड ऑपरेशन ऑन द डेस्टिनेशन.
फॉर द फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो में किससे, नेट मास्क से, नेट मास्क का ये यूज है. सो वी अप्लाई, वी टेक द फर्स्ट रो एंड नेट मास्क. तो क्या करेंगे, रो का नेट मास्क, इसको क्या किया, एंड किया विथ पैकेट डेस्टिनेशन. ये काम करना है एल्गोरिथम में. सो टेक दिस /27 से आपने एंड किया .100, आउटपुट निकालिए. /27 कितना होगा, देखिए नीचे कर दूं यहाँ पर. /27 will be what, 255, which is all 1, .255, which again all 1, again 255, which again all 1, and 224. हाँ, तो जो 224 होगा, this is going to be 1 1 1 3 0 and then 5. This is the binary number, and we have to end it with 100. 100 means 202.141, 0.55, 100. अब 100 यहाँ लिखिए, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए. 100 को कितना कन्वर्ट होगा, बाइनरी में 202 और 141 भी कन्वर्ट होगा, बट आई एम नॉट राइटिंग कन्वर्टिंग इट, बिकॉज इफ यू टेक एनीथिंग 5255 के साथ अगर 202 को आप एंड करेंगे, because 255 everything is 1, so the output will be 202 as it is, right? 141 का भी आउटपुट 141 ही आएगा, क्योंकि 255 से एंड कर रहे हैं, which is all 1. 55 का आउटपुट भी यही आएगा, right? तो ये तो ठीक है. अब 100 का निकालिए कितना आएगा. 100 के करने के लिए फर्स्ट बिट 0, 100 का सेकेंड बिट 1, थर्ड बिट 1, 96 हो गया ये. 96 के बाद 4 और ऐड करना है. 4 करने के लिए कितना होगा, पहली बिट 0 कर ली, फिर इसको 1 कर दूं तो हो जाएगा 4. 1 1 2 3 नहीं हुआ ना, ये तो 0 रहेगा. कितनी होगी भाई वैल्यू, कन्वर्ट करिए इसको. 0 फिर 0, अब 1 कर दूं, 1 फिर 0 0, 4 हो गया, ये 100 हो गया. अब इसको जब आप एंड करेंगे तो फर्स्ट 3 आर 1, सो वी विल गेट 0.011 एज इट इज. एंड इसके बाद बाकी 5 जीरो है, तो इधर कुछ भी हो, ऑल जीरोस आर गोइंग टू बी 2 3 4 5. यही बताया था ना मैंने आपको नेट मास्क में. तो नाउ सी दिस वैल्यू इज 202.141, 0.55, 0.96. So the output is 0.96. Okay, and now we see whether 0.96 matches with the destination 0.64. So it do not matches with 0.64. Okay, so we go to the next row, right? Go to next row. Next row में again आपने क्या किया, सेम अप्लाई किया, /27 and with 0.100. नेक्स्ट रो का मास्क भी /27 है. ये क्योंकि फिक्स नेट सबनेटिंग है, इसलिए सब जगह नेट मास्क 27 है, बट अलग अलग इफ वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग होगी जो कि जनरली रहती है, सो ये नेट मास्क अलग अलग होगा राउटिंग टेबल में. ओके, यहाँ पर ठीक है वही है. सो द आउटपुट इज 0.96 which is not matching with /0.32. so we'll go to next row. तो एल्गोरिथम में रो को आगे बढ़ा देंगे. अगेन /27, अगेन नेट मास्क थर्ड रो का अप्लाई किया. ओके, which is again /27, थर्ड रो का नेट मास्क एंड 0.100 डेस्टिनेशन पैकेट का 0.100.
So this again output is 0.96, which matches with 0.96 in the row 3, right? So this matches. So first thing is we need to find where 0.100 is in the routing table. It can be present or it may not be present. अगर present नहीं है तो क्या करना है बात को देखेंगे. So it is matching in the third row. So you can see now net mask is used to find out, to extract the initial address if that destination is present in that row. To extract the initial address. तो net mask आप क्योंकि node का आपने एड्रेस नहीं रखा है राउटर में, आपने रखा है नेटवर्क का एड्रेस या सबनेट का एड्रेस. तो सबनेट के अंदर जितनी नोड हैं उनका पैकेट के अंदर अगर डेस्टिनेशन कोई आता है तो आप नेट मास्क यूज करके पता कर सकते हैं कि भाई ये एड्रेस इस नेटवर्क सबनेट के अंदर है या नहीं है. तो नेट मास्क का ये पर्पस है सिंपल. लीनियरली आप बजाय सारी नोडों का एड्रेस रखें, आप एक एड्रेस रख लिया और नेट मास्क यूज करके डेस्टिनेशन में अगर वो प्रेजेंट होगा, अगर डेस्टिनेशन 0.100 है तो वो है प्रेजेंट. 0.96 आएगा अगर /27 अप्लाई करेंगे तो. अगर हाँ /28 है 0.100 पे अप्लाई करेंगे आएगा ही नहीं 0.96. ठीक है ना. या कुछ और नेट मास्क है तो नहीं आएगा. राइट. So this is the first step of the algorithm. Ki we need to match which row is matching. So row 3 is matching. यहाँ तक कोई समझ में ना आया हो तो बताइए. ठीक है. अगर आ गया समझ में, then the third row matched, and now what has to do? Now see the flag value. अगला step है flag value check करना. Now we need to find out the flag value of row 3 is 1. So we need to find out now whether this is a direct connected network with the router or indirectly connected network with the router. So flag value is 1. This means it's indirectly connected. Then what is? Now let us give the output of the forwarding algorithm. The output of the forwarding algorithm is next hop address. जो फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम है उसका जो आउटपुट है वो ये है कि नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या होगा. तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि राउटिंग का जो फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम है, जब पैकेट किसी राउटर के पास आता है तो उसको हम नेटवर्क लेयर को क्यों ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि नेटवर्क लेयर ये बता दे कि अगला हॉप कौन सा है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है, अगले हॉप का आईपी एड्रेस क्या है. बस इतना ही है राउटिंग एल्गोरिथम का काम, फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम का काम. ओके. So when a packet is received on a router, पहले तो लिंक लेयर पे रिसीव होता है और उसको फिर ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क लेयर पे. लिंक लेयर का हेडर हटा दिया और फिर नेटवर्क लेयर पे ट्रांसफर किया. तो नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस से क्योंकि डील कर सकता है तो वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को समझ लेता है जो आपने पैकेट जो प्रोग्राम लिखा हुआ है आईपी का. राइट. एंड नाउ इट यूजेस अ फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम, फाइंड्स आउट कि भाई नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है, अगले हॉप का एड्रेस आईपी एड्रेस क्या है. ये आउटपुट है फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम का, आईपी का ये आउटपुट है. सो दिस इज नेक्स्ट हॉप एड्रेस एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस इज नाउ रो 3 जो मैच की थी, रो 3 इसका गेटवे. That is the next hop address, which is equal to 0.34. 202.141.55, 0.34. So this is the next hop address, and that is the output of IP forwarding algorithm. IP का output यही है. Next hop address क्या हो गया? इतना हो गया. जब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं. Once
next hop address is known, the IP address of next hop is known. Now क्या होता है, IP और लिंक लेयर इन दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल यूज होती है जिसको बोलते हैं ARP, इसको कहते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. विल बी डिस्कसिंग दैट, बट आप ये समझ लीजिए अभी कि ये एक प्रोग्राम है जिसको आपने कॉल किया, आईपी ने कॉल किया ARP को. इनपुट क्या सप्लाई किया, इनपुट इज सप्लाइड 0.34 द IP एड्रेस. And what is the output of ARP? The output is the hardware address of 0.34. Okay. तो जो आपका ARP है, इसका जो प्रोग्राम है, इसका इनपुट हो गया आपका 0.34. तो IP ने कॉल किया ARP को और सप्लाई कर दिया 0.34, और इसका जो आउटपुट आ गया वो आ गया 0.34 का हार्डवेयर एड्रेस. एट दिस मोमेंट आई शुड राइट इट _h, 0.34 _h, hardware address of 0.34, which can be something A34 48 bits, जो कि हेक्साडेसिमल में लिखी हुई है, वो वैल्यू आएगी, कुछ ARP रिटर्न करेगा. ओके, तो ARP यूज हुआ. Once the ARP is used, तो अब जो पैकेट है, हार्डवेयर एड्रेस यूज ARP एंड 0.34 का हार्डवेयर एड्रेस, 0.34 का 0.34 का हार्डवेयर एड्रेस, दैट इज नोन. And now what happens? This IP packet 0.70 and 0.100, हाँ ये IP था. अब इसको एनकैप्सुलेट किया ईथरनेट वाले में या लिंक लेयर वाले हेडर में, और लिंक लेयर के हेडर में बाकी सब चीज तो रहेगी. सोर्स का IP, सोर्स का हार्डवेयर. अब सोर्स का हार्डवेयर कितना है, कौन सा सोर्स हुआ यहां पर अभी? Who is sending packet to R2? कौन भेज रहा है R2 को? R1 भेज रहा है. Okay, so R1 is the source. अब R1 का कौन सा इंटरफेस सोर्स होगा, 0.65 की 0.33? R2 को आप भेज रहे हैं तो 0.33 वाला इंटरफेस यूज होगा. ओके, सो हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, समझ में आ रही है बात? R1 इज द सोर्स. अब R1 का हार्डवेयर एड्रेस यूज होना है. R1 में दो हार्डवेयर एड्रेस हैं, 165 जो इंटरफेस है, हार्डवेयर एड्रेस ऑफ दैट. द अदर वन इज द इंटरफेस व्हिच इज 0.33. अब आपको R2 को भेजना है तो 0.33 वाला इंटरफेस यूज होगा, ईथर 1 यूज करके भेजेंगे. तो 0.33 का जो हार्डवेयर एड्रेस है, ओके, वो लगेगा सोर्स में. तो सोर्स विल बी द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ 0.33. ओके, तो द हार्डवेयर एड्रेस इज 0.33 का हार्डवेयर एड्रेस. दिस इज द सोर्स हार्डवेयर एड्रेस. एंड डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस ये अभी निकला कि 0.34 का हार्डवेयर एड्रेस. Okay, so this is now link layer packet, और लिंक लेयर को ट्रांसफर हो गया पैकेट. लिंक लेयर में ये हेडर ऐड हो गया, उसको IP एड्रेस पता लग गया डेस्टिनेशन का. So this is the link layer packet, and now link layer sends that packet out from R1, right? ये ऊपर देखिए, R1 से ये पैकेट गया, तो पैकेट will reach to N2 and R2 both. ईथरनेट में यही होता है, आप बस के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो N2 और R2 दोनों को चला जाएगा. हब लगा के करेंगे तब भी R2 और N2 दोनों को चला जाएगा पैकेट. और अगर स्विच लगाएंगे तो अगर स्विच में टेबल बन गई है तब तो वो R2 को ही जाएगा, N2 को नहीं जाएगा. बट अगर स्विच वहां लगा हुआ है और टेबल नहीं बनी हुई है, स्विच टेबल इनिशियली,
then the packet will go to N2 and R2 both. Okay. Anyway, this packet using link layer Ethernet protocol, the packet will go to this packet P will go to N2 and R2. N2, what it do? It checks the destination hardware address, which is not matching, so it rejects that packet. And R2, it checks the destination hardware address, which is matching, it accepts that packet. Okay, so R2 accepts this packet, the link layer of R2 accepts this packet, and what it do? It removes this portion. R2 removes this portion, the link layer removes the link layer header, और फिर अंदर से जो ये पैकेट निकला इसको फिर से R2 के नेटवर्क लेयर पे भेज देगा. तो R2 की नेटवर्क लेयर तक इस तरह से पैकेट पहुंचा. अब हम देखते हैं कि R2 से पैकेट N1 तक कैसे जा रहा है, सॉरी N3 तक कैसे जा रहा है, R2 to N3. यहां तक अगर कुछ समझ में ना आया हो कि हाउ द पैकेट हैज रीच्ड टू द नेटवर्क लेयर ऑफ R2, और जितने स्टेप बता रहा हूं जब एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा, होपफुली अगर आप यहाँ आके पेपर देंगे तो सब्जेक्टिव ही देना होगा, तो एक एक स्टेप ये भूल जाइए. आई नीड ईच एंड एवरी स्टेप to be explained by you in writing while describing the forwarding of the packet, वरना नंबर दूंगा नहीं. और अगर बनाना पड़ा ऑब्जेक्टिव तो इसी पे बनाऊंगा पूरा, मिलेगा नहीं कहीं इंटरनेट में, चाहे कितना ही ढूंढ लीजिएगा, इसी पे पूरा बनाऊंगा. ठीक है ना, तो इसको समझ लीजिए, स्टेप्स को देख लीजिए, और तभी वो समझेंगे तभी लिख पाएंगे. रट तो कितना ही कोशिश कर लीजिएगा, जल्दी से रटा नहीं जाएगा. कुछ लोग होते हैं भाई रट लेते हैं, मे बी, बट तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो हाउ द पैकेट हैज रीच्ड अप टू R2 बताए मुझे. वरना excuse me sir. हाँ बताओ बेटा. Sir, in the Ethernet header, why have you put a cross below the source hardware address and destination hardware address? Because the Ethernet protocol will use the Ethernet header. So Ethernet header contains source hardware address and destination hardware address. No, sir, what is the बोलो. So what is the reason for the cross? Like, will For these the- be for the cross, sir? For the cross, X? cross, that cross of actually when that will be reaching to R2, so this header is going to be removed by Ethernet by the link layer, and then is going to be transferred to network layer. So that's why I crossed it later on. है ना, Okay. मुझे क्रॉस लगाया है, वो बाद में लगाया है. शुरू में पैकेट पहुंचा, पैकेट ये है, which is having the Ethernet header. Once it reached to R2, this link layer of R2 will remove this. After accepting the packet, will remove this and will supply the remaining part to the network layer, which is have the IP address. है ना, जो R2 पर आएगा, बात समझ में आ गई? नहीं, ये क्रॉस ही बताना चाह पूछ रहे हो ना कि उनकी क्रॉस क्या है? Yes, sir. I got it, sir. Understood now. Okay. So actually, I should have made another packet and then should show you that कि भाई पहला पैकेट R2 पे पहुंच गया, then I should have created another packet कि भाई अब क्या है link layer पे आ गया, and then should have crossed that. मैंने उसी पैकेट में कर दिया, आप लोग अलग-अलग बना लीजिएगा उसको तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना? Okay. Now come to once the packet is at R2,
तो पहले तो R2 की राउटिंग टेबल बना लीजिए, सब लोग बनाइए जरा, मैं भी बनाता हूँ, फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए तब तक आप R2 की राउटिंग टेबल बनाइए, बिकॉज राउटिंग टेबल ऑफ R2 इज गोइंग टू बी यूज नाउ। उसको बनाइए, मैं भी बनाता हूँ। R1 फिगर दोबारा बनाना पड़ेगा ना मुझे, तो पीछे ब्लैक बोर्ड होता तो इसको साफ कर लिया जाता है। चलिए, साफ तो यहाँ भी हो जाएगा, बहुत देर लगती है। R2 और ये हो गया N3, ये हो गया 0.100, 0.97, ईथर 1, ओके, और ये हो गया 0.32, 0.34, 0.33, और ये आपका N1 0.70, और ये हो गया 0.65, दिस इज 0.64, ओके। तो R2 की बनाते हैं राउटिंग टेबल। R2 देखिए, विद R2 डेस्टिनेशन मास्क, नेट मास्क एंड क्या था, गेटवे, और या नेक्स्ट स्टॉप, और इंटरफेस एंड फ्लैग। So with R2 you can see that कि 0.34, 0.32 is the subnet जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, पहले उनको बना लेते हैं। 0.32 R2 से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो नेटमास्क /27 और गेटवे हो गया 0.34, इंटरफेस हो गया R2 का, अगर इसको कहें ईथर 0 और इसको ईथर 1, ओके। देखिए R2 और R1 में इंटरफेस के नेम सेम हो सकते हैं, क्योंकि एक डिवाइस के अंदर यूनिक है, वो अलग अलग डिवाइस में नेम सेम हो सकते हैं, ओके। आईपी एड्रेस यूनिक रहेगा, लेकिन इंटरफेस ईथर 0, फ्लैग ये डायरेक्ट कनेक्शन है, फ्लैग 0। दूसरा सबनेट जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 0.96, /27 0.96 वाला इधर डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, तो 0.97 के थ्रू ईथर 1, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है। और यहाँ एक और है 0.64, है ना, 0.64 /27, 0.64 को अगर ट्रांसफर करना है, इफ R2 हैज अ पैकेट एंड द डेस्टिनेशन इज node which is connected in 0.64 network, so R2 should send it where, to R1, और R1 को भेजने के लिए क्या करेगा, वो 0.33 को पैकेट भेजेगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टॉप विल बी 0.33, और R2 अपने इससे भेजेगा तो ईथर 0 की तरफ जाएगा से, और ये 0.64 इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू R2, so the flag value is 1, ठीक है। Now see how the packet is transferred from R2 to N3, ये दूसरा स्टेप है। This step is used, देखिए R1 से R2 जैसे पैकेट गया, when the packet is traveling over the internet and it is passing through different routers, the same forwarding algorithm in the same way is used to forward it through different routers. ये जो स्टेप है, when the packet reaches to the last hop, लाइक आपने गूगल को भेजा पैकेट, तो गूगल का एक राउटर होगा जिसके आगे गूगल का सर्वर लगा होगा, राउटर के आफ्टर द राउटर शुड बी हैविंग द सर्वर ऑफ द गूगल। तो हम लास्ट हॉप कह रहे हैं, ये वाले राउटर पे जब पहुंच जाएगा, राइट। सो ये सब जगह ऐसे ही यूज होगा, व्हेन द पैकेट रीचेस टू द लास्ट हॉप, द डिलीवरी ऑफ द पैकेट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू डिलीवर हियर, ठीक है। जब आखिरी हॉप पे पहुंच जाएगा पैकेट, आखिरी राउटर पे पैकेट पहुंच जाएगा, तब
मशीन को कैसे डिलीवर होगा? हो सकता है R3 सर्वर हो, ये N3 जो है वो सर्वर ही हो, गूगल का सर्वर है मान लीजिए N3, तो वो वहां पैकेट कैसे डिलीवर होगा? सब जगह ऐसे ही होता है. So let us see how it is delivered. What happened at R2? Packet was this. Because R2 की network layer में क्या होगा वो देख रहे हैं हम. Packet is 0.70 and 0.100. Because link layer of R2 removed that portion. Link layer ने क्या portion remove किया था? ये portion. 0.33 का hardware and 0.34 का hardware. This portion was removed by link layer. Link layer of R2 and supplied the remaining portion to network layer. So now R2 network layer, what it do? Again the same thing. Slash 27 first row liya, take the row 1 slash 27 and with the destination of the packet which is 0.100 and the output is 0.96 and this is not matching with 0.32. Okay, so go to row number 2. Row number 2 slash 27 matched with and with 0.100, output is 0.96, which is a match, which is matching with the 0.96 destination. Okay. Now see the flag value. Once the match is found, once the row is matched, now check the flag value. And what is the flag value now? It is 0. This means it's a direct connection. तो एल्गोरिथम में जब डायरेक्ट कनेक्शन है तब और एल्गोरिथम में जब इनडायरेक्ट कनेक्शन है तब देखिए चेंज क्या है यहाँ पर. Just try to see what change is here at this point. When the flag value is 0, now next hop address is not from the routing table. Next hop address is the output of forwarding algorithm, right? So where the connection is a direct connection, next hop address is not coming from the routing table now. Next hop address is packet ka destination address. And that is a change. So for direct connection, next hop address is from the packet, not from the routing table. Indirect connection है, तो next hop address is from the routing table. Okay. So in this case, packet destination is 0.100. So next hop address is 0.100 now. And now ARP for 0.100. And the output is of ARP is 0.100 ka hardware address. Okay. So now the link layer, ये आपका हो गया 0.70 and 0.100. ये तो हो गया. और the link layer will send this using source IP, source hardware. Source hardware कितना है? R2 का हार्डवेयर किस इंटरफेस का? 0.97 का. तो 0.97 हार्डवेयर, दैट इज द सोर्स हार्डवेयर. एंड डेस्टिनेशन हार्डवेयर क्या हो गया? 0.100 का हार्डवेयर. एंड दिस पैकेट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम R2. पैकेट विल रीच टू N3. इट कैन रीच टू अदर नोड्स अगर और नोड कनेक्टेड है. अगर बस है तो, हब है तब भी अदर नोड्स को जाएगा. But other nodes will reject it. अगर switch है, in that case, the packet will only go from R2 to N3. अगर switch में table में entry है, अगर नहीं है entry, तब फिर वो broadcast कर देगा switch.
Okay, so we'll go to all the connected nodes on that link. ठीक, so packet reaches to other nodes will reject क्योंकि destination hardware will not match with their hardware address. Only N3 accept because destination hardware is matching with the hardware of N3. Okay, and now what N3 do? 0.70, 0.100 and it removes this. आपकी मैंने अलग बना दिया इसको, 0.97 hardware and 0.100 hardware. So link layer of N3 removes this and transfer this portion to network layer, and network layer came to know that this packet is for itself, so now it is not going to forward that packet. ठीक है ना, अभी तक जहां पे भी पैकेट पहुंच रहा था, बिकॉज द पैकेट वाज नॉट डेस्टिनेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर नोड, उसका मैच नहीं कर रहा था तो वो फॉरवर्ड हो रहा था. बट हियर द पैकेट हैज रीच्ड टू द लास्ट नोड because how it is known, 0.100, so that node is not going to forward it again now, right? Now that node has accepted and it's transferred the packet to transport layer and then from there to application layer. Okay, and you know at the end node only transport layer and link application layer comes into picture. So this is how the packet reaches from R2 to N3. तो जब भी आपकी लास्ट हॉप आएगी, लास्ट हॉप राउटर जो होगा, लास्ट राउटर जो होगा, वो पैकेट को हमेशा इस तरह से ट्रांसफर करेगा, उससे नोड डायरेक्टली कनेक्टेड होगी. तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताए. यही दो स्टेप यूज होते हैं इंटरनेट पे पैकेट ट्रांसफर करने के लिए. राउटर टू राउटर, राउटर टू लास्ट हॉप. Hello, sir. बताओ. So in routing table row 3, how the interface is selected? Row 3, how the interface Yes. is this. This ether 0, na? Yes, sir. Ether Yes, sir. 0. R2, if you see R2, if R2 has to send packet towards 0.64, it need to transfer to 0.33. 0.33 को भेजने के लिए इसी इंटरफेस को यूज करेगा ना, ईथर 0 को. इधर से तो नहीं भेज सकता, इधर तो कनेक्शन ही नहीं है ईथर 1 की तरफ, तो या तो ईथर 0 यूज करेगा या ईथर 1 यूज करेगा. सो बिकॉज इट इज दिस साइड, तो ईथर 0 को यूज करेगा. Okay, so कौन से साइड कनेक्टेड है ये कैसे मालूम चलेगा? When we used to provide the IP address, राउटर को IP एड्रेस आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा मैनुअली. ऑटोमेटिकली राउटर का IP एड्रेस जनरली नहीं किया जाता है. हाँ, तो उसको आप मैनुअली देंगे जब IP एड्रेस, या तो आप फिक्स करें DHCP को. DHCP की प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे अगर तो देखेंगे तब हो सकता है, बट जनरली सर्वर्स को और राउटर्स को IP एड्रेस मैनुअली ही दिया जाता है. Then you know, that comes to know कि भाई 0.33 की तरफ है ये इंटरफेस. फ्रॉम दैट नॉलेज कि आपने जब दिया 0.34, दैट मीन्स 0.32 वाले सबनेट की तरफ है. Okay. So interface which is configured with 0.34 is towards 0.32. तो अगर ये यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब आप लोग क्या करके लाइएगा, N1 की राउटिंग टेबल आप लोग खुद बनाइएगा एंड N1 टू R1 पैकेट को ट्रांसफर करके देखिएगा. ये भी डायरेक्ट कनेक्शन में आएगा,
N1 to R1 बिकॉज N1 और R1 का कनेक्शन डायरेक्टली है। ओके, ये मैंने छोड़ दिया था ना शुरू में, इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं डायरेक्ट कनेक्शन पहले नहीं बताना चाहता था। मैं चाहता था कि आपको डायरेक्ट कनेक्शन पे पैकेट ट्रांसफर कैसे होता है, पहले आप इनडायरेक्ट कनेक्शन पे देखें। R1 से R2 कैसे ट्रांसफर होता है ये देखें, ये क्योंकि राउटिंग टेबल से सीधे दिख रहा है। और फिर डायरेक्ट कनेक्शन पे कैसे होता है। तो N1 टू R1 जब आप पैकेट भेजेंगे, आप उसको भेज के देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप करके लाइएगा इसको कि N1 टू R1 हाउ वी आर ट्रांसफरिंग द पैकेट, क्रिएट द राउटिंग टेबल ऑफ N1, पहले आप राउटिंग टेबल बनाइए N1 की, and then transfer the packet from N1 to R1. The same packet, 0.70 is the source IP and 0.100 is the destination IP. Okay, तो R1 तक N1 से भेजिएगा, वो डायरेक्ट कनेक्शन होगा, देखिएगा आप कि डायरेक्ट कनेक्शन पे जाएगा वो। उसको भेज के आइएगा तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? Anybody is having any other? हाँ बेटा बताओ। सर मैंने सर ये टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि जो OSI मॉडल में जो प्रेजेंटेशन लेयर थी ना, वो फिर से TCP में भी इंट्रोड्यूस हो सकती है क्योंकि मॉडर्न ऐप प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सर वो उस प्रोटोकॉल लेयरिंग में क्या क्या होता है सर, प्रेजेंटेशन लेयर में थोड़ा सा टिप्स दीजिए। और प्रेजेंटेशन लेयर में ना, जो जैसे ऑथेंटिकेशन है तुम्हारा, हाँ तो हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे करते हैं ना ऑथेंटिकेशन। यस। जब आप टेलनेट करते हो या SSH करते हो तो लॉगिन पासवर्ड देते हैं ना, या आप बहुत जगह लॉगिन पासवर्ड देते हो, तो वो ऑथेंटिकेशन है। और हम जनरली क्या करते हैं, उसे एप्लीकेशन लेयर पे यूज करते हैं क्योंकि TCP IP में ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन लेयर में इनबिल्ड है। OSI लेयर में ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है। TCP IP में तो वो एप्लीकेशन के अंदर ही है, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर जो है एप्लीकेशन के अंदर ही है TCP IP में, है ना। दूसरा जो एक आप लोग करते हैं, इंक्रिप्शन यूज करते हैं। हाँ, बहुत सारी जगह इंक्रिप्शन यूज करते हैं ना आजकल, तो सब सिक्योरिटी में जितना भी लगता है सब इंक्रिप्शन 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 इंक्रिप्शन। हाँ, इंक्रिप्शन भी प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है। या कभी कभी एक बड़ी फाइल भेजनी है हमको, तो उसको कंप्रेस कर देते हैं, फाइल को कंप्रेस करके भेजते हैं, वो पार्ट भी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। लेकिन हम लोग TCP IP में सब चीज एप्लीकेशन लेयर पे करते हैं। तो ये है प्रेजेंटेशन लेयर में, ये होता है फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में है दूसरा साइट, समझ ले उस फॉर्मेट को, तो वो भी फॉर्मेटिंग भी प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है। फॉर्मेट इसीलिए होता है कि आप रिसीविंग प्रोग्राम उस फॉर्मेट को समझ पाए, दोनों एंटिटी जो सेंड कर रही है जो रिसीव कर रही है, दे शुड नो कि अच्छा ये फॉर्मेट है, तभी तो आप उसको समझ पाएंगे। तो ये सब प्रेजेंटेशन का पार्ट है। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो चलिए, अगर नहीं है तो फिर बंद करते हैं। राउटर वाला वो पार्ट करके लाइएगा, और राउटिंग में पैकेट ट्रांसफर, और अभी तक मैंने बस के ऊपर किया था। जब क्वेश्चन दूंगा तो वहां पे स्विच लगाऊंगा, बस भी हो सकती है, पर स्विच अगर लगेंगे तो फिर वह लिंक लेयर भी यूज करनी पड़ेगी स्विच से पैकेट को भेजने के लिए। बस में तो जरा सीधे सीधे दिख जाता है इसलिए, क्योंकि एक्चुअली तो जनरली स्विच ही यूज होता है। जो राउटर को हमने N1 से कनेक्ट किया है, या राउटर को N2 से कनेक्ट किया है, या एक राउटर को N3 से कनेक्ट किया है, तो वो बस से किया है कनेक्ट, बीच में जनरली वो स्विच यूज होता है। तो इसको करके करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अभी फिर यही चलेगा, और सबनेटिंग वाला पार्ट भी अगर टाइम बचा तो फिर सबनेटिंग वाले पार्ट पे भी अभी वापस आएंगे, इसमें भी एक दो चीज रह गई। तो किसी को ठीक है, फिर बंद करते हैं। ओके, थैंक यू।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.